It's my pleasure today to welcome all dignitaries on the dais at today's curtain raiser program for India MedTech Expo 2023, scheduled at Gandhinagar, Gujarat. On behalf of FICCI, I thank all friends from media and the representatives of Indian industry for their presence today. May I now request Ms. S. Aparna, Secretary, Department of Pharmaceutical, Ministry of Chemical and Fertilizers, Government of India, to share her welcome address and set up the context for today's program. Please welcome Ms. Aparna. Good morning. Is my voice also echoing? In fact, good noon. A very, very warm welcome on behalf of the Department of Pharmaceuticals to all the media personnel present here today. We greatly appreciate your attendance and your continued support. Sir, a very warm welcome to our Honorable Minister for Chemicals and Fertilizers, Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandaviya, who has been a constant source of guidance and inspiration for us. A very warm welcome to also our Honorable Minister of State, Dr. Bhagwant Khuba Sahib, who again has been a pillar of strength for the department in all its endeavors. We are extremely happy to be partnering with FICCI, who is here with us, Shri Pathak, SG, who has again left no stone unturned to ensure that our effort together will be very successful. I also take this opportunity to introduce our new Joint Secretary Policy. All of you knew Dr. Yuvraj. This is Shri Ravindra Pratap Singh. He has recently joined us as JS Policy from Cabinet Secretariat. Today's event is the curtain raiser for the India MedTech Expo 2023, which is being organized as a co-branded event to the G20 Health Ministers Conclave, being held at Gandhinagar, Gujarat from 17th to 19th. We will be making a short presentation. Thank you. We will be making a short presentation giving you the inputs of all the components within the India MedTech Expo 2023, and that will be provided shortly. But I would just like to, in my opening remarks, set some context. All of you are aware that the medical devices sector is a very important component of the entire healthcare sector. It is one of the fastest growing segments in terms of the manufacturing industry. It has huge potential, and recognizing the same, both the potential and the contribution, the government came out with the National Medical Devices Policy just recently in the end of April 2023. You were all good enough to cover the policy very extensively. In addition, there are several programmatic interventions to promote and support the industry. This includes the PLI for medical devices, where again we have been quite fortunate in receiving good contribution and participation from the industry. You are aware that there is a import dependence on certain kinds of medical equipment, and it is precisely in these products that we now have installed capacity for production through domestic manufacturing in our country. So you will be happy to know about 37 unique products which were earlier majorly imported are now being manufactured within the country, and that is a good sign in terms of our objective of self-sufficiency in healthcare products. We also launched a scheme for support of setting up medical devices park
So 4 parks are now currently under construction in Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. You would also recall that a couple of months ago, we unveiled another policy, another scheme for support to clusters. So these are organic medical device clusters that already are functional in different parts of the country, and very soon we will be advertising for providing support to them as we have been providing support for pharmaceutical clusters. One important segment in this scheme, the last one that I mentioned, is actually support for strengthening the testing laboratories, which will contribute to better capacity to calibrate and test medical devices produced in our country. And finally, you would again be aware, I'm sure, I'm just listing them for your recall, the National Medical Devices Export Promotion Council has also been set up with its headquarters in Uttar Pradesh, Yeida, and that has also become functional. So it is in the background of the policy and the programmatic interventions that for the first time the department is holding this Indian MedTech Expo. The purpose of the expo is to bring together all players, all stakeholders, both in the manufacturing side as well as on the demand side. So we will also be inviting, in fact, we have invited the major procurement agencies as well as private hospitals and diagnostic companies who are the major customers for the medical devices industry. So the purpose is to bring them together, give visibility about the demand trajectory that the manufacturers can look forward to, and also showcase the current availability of manufacturing capacity in terms of large companies, MSMEs, and startups on a single platform. Another feature, which again will be mentioned in the presentation, is that the expo will have a future pavilion and an R&D pavilion. So academic institutions and research institutions, as well as private companies having research capabilities, will also find place here. And lastly, we have invited state governments, and some of them are participating, to project their plans for supporting and incentivizing the medical devices industry. So our effort is to make it very holistic, well integrated, and it is with the guidance of Honorable Minister that we decided to have it as a co-branded event alongside the G20 Health Ministers Working Group, thereby taking this opportunity to showcase India's capacities as well as growing potential in this sector for all the partners who will be visiting the G20 Health Ministers Conclave. So I do hope that many of you will find it convenient to visit the MedTech Expo at Gandhinagar. FICCI is coordinating as well as our PIB, so please feel free to let us know when you would like to visit, and we will be happy to receive you there. And so with these few words, I once again extend a very warm welcome to all of you present here, as well as to our dignitaries on the dais, and end my talk here. Thank you. Thank you, Ms. Aparna, for your warm welcome and sharing all the related details for this significant expo. This will be indeed very helpful for all. Now I would like and request Mr. Shailesh Pathak, our SG FICCI. Thanks. On behalf of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, we would like to welcome Dr. Mansukh Mandaviya, Honorable Minister, Shri Bhagwant Khuba, Honorable Minister of State, Secretary S. Aparna ji, and Joint Secretary. On behalf of Indian industry, I'd just like to say that FICCI, as a 96-year-old body, wants to see the medical devices sector grow at least 2 times, 5 times in the next 3 to 5 years, 10 years. And we are really grateful that under the leadership of Honorable Minister Dr. Mandaviya, there has been perceptible change पिछले 5 सालों में
आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कितना बदलाव आ गया. So this MedTech Expo that we are talking about is hopefully going to contribute to the speed of change in industry. पहले हम कहते थे सरकार मदद नहीं करती है. अब जब सरकार हमें पूरा कंधा से कंधा मिला के खड़ी है, तो हमारे ऊपर है कि हम कितना तेज चल सके. With those remarks, may I invite my colleague Praveen Mittal to make a presentation in detail about the expo. Please go. Thank you, Shri. Thank you, everyone. Thank you, dignitaries on the dais, Honorable Minister, sir, Honorable MOS, sir, Secretary, ma'am. For friends, this is the first time such an elaborate program is happening with the support of the government. And also all our industry bodies have come together to put this entire program from the 17th to the 19th of August. The venue is Helipad Exhibition Center in Gandhinagar. And we are looking forward to your presence there and, of course, promoting it in a big way. So if we talk about the medical device industry, the market size is 11 billion in 2020. And now, of course, we are looking forward to a growth of and reaching to $50 billion by 2030. We're growing at the rate of 16.4 CAGR. Highest growth potential is what we have. And currently, if you see, we have 5 broad classifications of the medical devices: electronic equipment, surgical instruments, IVD reagents, implants, and consumable and disposables. So the objective was very clear that we need to develop the entire ecosystem of the medtech sector and take it to the growth trajectory and create a separate brand identity for the sector, and of course look at the broader vision of our government of Vision 2047. We're also looking at inviting investors, and of course the entire ecosystem is present there. The entire program is based on 3 components: knowledge, experience, and networking. Knowledge in terms of our conference sessions. We would have the pleasure of hearing our Honorable Minister and his vision during the inaugural session. Experience in terms of our exhibition, where you have the participation of MSME companies, you have the participation of the foreign companies who operate in India. We have a government pavilion for the first time. Secretary ma'am instructed that all our government departments should be there. And of course, these states, as ma'am said, both the medical devices parks, the states which have been allocated, they are going to come, plus other states are also participating. And then, of course, the highlight of the exhibition is our startup pavilion, where we get to see about 75 plus startups. Future pavilion, the technologies which are for the sector available, and how the future of healthcare would be. And of course, the R&D pavilion, which is again an important highlight of the program. A buyer-seller meet is an important networking component. We have about 231 foreign buyers coming from 50 plus countries. A very focused MedTech regulator session is being organized. Since this is a co-branded event with the G20 Health Ministers meeting, which is happening, so we will also have the visit of the Honorable G20 ministers and also the delegates coming to the program. That's the exhibitor's profile. We have the entire ecosystem being present there. So we have invited and we have confirmations from the state procurement agencies, the healthcare providers, various clinical and healthcare associations. The foreign missions are coming. The various multilateral organizations that are attending the G20 program, they are also coming for this, both the conference as well as the exhibition. As I said, we have huge support from various other ministries who have come together and support us. That's the list of them. And of course, all our partner associations, a lot of them are also present in this room while we are having this curtain raiser. That's the collective strength of our association industry and our members. We have all come together to ensure that there's a huge participation. The theme has been very carefully chosen. India is the next global medtech hub. We are talking about the future of devices, diagnostics, and digital.
It's the total 17,000 gross square meter areas of the exhibition. This talks about how the industry interest has been and how the entire things are shaping up. So as I said, there are close to 30 plus companies that are talking about 70 plus of innovations in the future pavilion. About 60 plus R&D projects are going to be showcased, 75 startups, specific government pavilions to look and address the industry issues. And of course, we have the MSME Indian and the international industry. We start on 17th of August in the afternoon with the inaugural session, and of course the buyer-seller meet will continue for 3 days. We have very specifically curated thematic sessions, and again, our partner associations have come on board to support and put these conference sessions under the guidance of Secretary Ma'am and the officials of the department. This is day 2. We have sessions which are on R&D, which is on skill development. We are talking about future trends for geriatric and home-based care. We also have a very important session, Make in India for the World, global manufacturing competitiveness. And of course, various central agencies have been invited to do a demand forecasting in terms of what is the requirement which is going to happen in the next 5 to 7 years. And then, of course, each day we expect G20 delegates and honorable G20 ministers to visit the exhibition. We close with the valedictory session, and of course, some workshops are also taking place on day 2 and day 3. This is the representative list of the government speakers. We have secretaries to the Government of India as chairs to the program. We have the presence of honorable ministers, both from central government as well as from the state governments, Dr. V.K. Paul, and many other illustrious speakers are participating. And that's the representative list from the industry, of the industry speakers. As you see, all these CEOs, were very, very carefully chosen as per the theme. That's the list of our gold sponsors who have very graciously, be a part of this program. And of course, large number of silver sponsors as well. The Future Pavilion is going to be a key highlight of our exhibition, where, as we said, we will talk about the artificial intelligence, point of care, robotics, Internet of Things. So we talk about Future Pavilion concept as two-piece journey, the improved patient journey, how in future from now to then it will improve, and of course the enablers for achieving this. That's the look and feel of latest products and technologies. The experience zone, future-ready hospitals. These are the list of the companies showcasing the 70 plus technologies in the Future Pavilion. R&D Pavilion is another important effort in terms of inviting our IITs, IISc, IIITs and NITs, where a lot of research is happening, and a lot of time it doesn't get showcased. So there's an important forum wherein we are even showcasing that. So we have the entire journey in terms of the journey of wheel, where a lot of innovations that have taken place over years would be, found on the journey of wheel. Then we have the product R&D life cycle, the MedTech design lab, the thinking lab. That's the look and feel, the design thinking lab, the product display areas. So it is going to give a very wholesome experience. And of course, then we have 60 plus technologies showcased by about 70 plus companies. The MSME showcase, we have a lot of participation from the MSME segment, and specifically keeping in mind very reasonable prices were kept for their participation. Of course, the government pavilion, which we spoke about, ideal platform for having a B2G and G2G interactions. We have these states, 7 states are participating. We have all the 4 medical devices, park states, which is Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, and UP, they are participating. Apart from this, we also have participation from Andhra Pradesh, Rajasthan, and Gujarat, which is also the host state for the program. The International Buyer-Seller Meet.
And if you see these statistics, they speak for themselves. We have participation of buyers from Africa, ASEAN, CIS, Middle East, and Oceania, and very high-profile government officials from Ministry of Health, which is about 55 in number, are participating. We have 111 importers who are coming from these countries, and of course some journalists and the procurement agencies too. So that's the contact details for all of us. In case if you need any information, any support or help, please do reach out to us. And FICCI is privileged to partner along with Department of Pharmaceuticals in putting this together. Thank you so much. Just one moment. Praveen, you are Mr. Praveen Mittal. Where is, just put the slide back. Where is Mr. Abhishek? हाँ, आप सबको ध्यान दिलाना है कि इन दोनों लोगों से मिल सकते हैं. Thank you. Thank you. Thank you, SJ. Thank you, Mr. Mittal. Now I invite Honorable Minister of State for Chemical and Fertilizers and New and Renewable Energy of Government in India, Shri Bhagwant Khuba. इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 के कर्टन रेजर का इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के हेल्थ मिनिस्टर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मेरे बड़ी मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्रीमती अपर्णा जी, श्री आरपी सिंह जी, शैलेश पाठक जी, मनीषा वर्मा जी, मानस मुजमदार जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवर, यही महीना 17, 18 और 19 तारीख को गांधीनगर में देश के
धन्यवाद Minister Khuba ji. Now, I invite our Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, Government of India, Dr. Manshukh Mandaviya, just to give his. ये चल जाएगा ना? वहाँ एको आ रहा है. (17 to 19 August) G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर में हो रही है. इस समिट के साथ कई कार्यक्रम भी, कई इवेंट भी साथ में ही हो रही है. और मैं मानता हूँ कि हेल्थ सेक्टर और फार्मा सेक्टर की आयुष मिनिस्ट्री की एक होलिस्टिक हेल्थ के देश की सबसे बड़ी समिट होगी. उसमें मेडटेक एक्सपो भी लगेगा. उसमें मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए भी सेमिनार होगा, एक्सपो होगा. साथ में हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर इंडिया को दिया है. और गुजरात में जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बन रहा है. इस सभी को एक साथ में G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट के दरमियान महात्मा मंदिर में उसका कार्यक्रम होगा. हेल्थ सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आयुष सेक्टर, हमने बहुत सालों तक साइलोज में सोचा है, टोकन में हमेशा सोचते रहे. लेकिन मोदी जी की कार्य पद्धति रही है सारी चीजों को होलिस्टिक अप्रोच के साथ टोटल में सोचना. ये टोटल सोच का ये नतीजा है कि हमें कोई गोल अचीव करना है तो हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए. हमें हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ करना है तो फार्मा सेक्टर साथ में ही है. हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है. हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं. उसके लिए 2047 का विजन भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना लिया है, मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बना लिया है. 5 साल में हमें क्या करना है, 10 साल में हमें क्या करना है, 2030 में हमें कहाँ पहुंचना है. मेडिकल डिवाइस सेक्टर में आज $11 बिलियन से हमें $30 बिलियन तक पहुंचना है. तो वहां पहुंचने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ क्या करना चाहिए. आपने देखा होगा लास्ट ईयर में हमने फार्मा सेक्टर में खर्च किया है. पहले PLI 1, PLI 2 स्कीम आई. अगले 5 साल में मेडिकल डिवाइस सेक्टर में हम 4100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए तय किया है. जहां जिस टाइप का इंटरवेंशन की आवश्यकता है वहां इस टाइप का समय समय पर इंटरवेंशन हो बहुत आवश्यक होता है. और वो स्टेप बाय स्टेप कब करना हो भी हमने सुनिश्चित कर लिया है. अब आप लोगों ने देखा होगा देश में जब कोविड क्राइसिस आई उस वक्त असेसमेंट किया गया
कि हम हमारी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड फॉर्मुलेशन में तो है। दुनिया में 20% जेनेरिक मेडिसिन दुनिया को सप्लाई करने वाली कोई कंट्री है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। दुनिया 5 फील खाती है तो उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनेरिक गोली होती है जो दुनिया खाती है। लेकिन हम एपीआई पर, कई एपीआई पर हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्री पर थी और कई ऐसे 43 टाइप के एपीआई तो ऐसे थे कि जिसका 95% से अबव केवल एक ही कंट्री से या तो विदेश से आता हो, और वो शायद नहीं आया तो देश की हेल्थ सिक्योरिटी पर भी उसकी इफेक्ट आएगी, फार्मा इंडस्ट्रीज पर भी उसकी इफेक्ट आएगी। क्या करना, असेसमेंट हमने ही किया, ऐसा नहीं भूतकाल में भी हुआ ही होगा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने उसके पर तुरंत ही एफर्ट किया और PLI 1 स्कीम लाया। PLI 1 स्कीम में 15,000 करोड़ रुपया उसमें मेडिकल डिवाइस और फार्मा सेक्टर के लिए रखा गया। 15,000 करोड़ रुपए से 43 एपीआई देश में ही बने, उसके लिए सुनिश्चितता तय की। उसके पर आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया में कुछ इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, हम सारा एक्सपोर्ट ही करेंगे। जी नहीं, ग्लोबलाइजेशन के समय में आपको एक्सपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट भी करना है, परंतु क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, डिफेंस हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, फार्मा मेडिसिन हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, वो देश में ही क्रिटिकल चीजें बननी चाहिए। उसमें से PLI 1 स्कीम लाए। आज अच्छी तरह से PLI स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया है। 23 एबोव एपीआई आज ऑलरेडी इंडिया में बनना चालू हो गया। बाद में सोचा कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बनाए रहना है तो क्या करना चाहिए, हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करें और मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में भी हम बने रहे। उसके लिए दुनिया से सस्ता कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग करके हम दुनिया के मार्केट में कैसे हमारी मेडिसिन को डाले। PLI 2 लाया 15,000 करोड़ रुपीस की, 14,000 करोड़ रुपीस PLI 1, 15,000 करोड़ रुपीस PLI 2। उसके बाद हमने सोचा कि मेडिकल डिवाइस सेक्टर में और बल्क ड्रग में भी हमें इनिशिएटिव लेना होगा, तो PLI 1 का एक पार्ट बनाया। देश में 3 बल्क ड्रग पार्क, क्योंकि उसके लिए इकोसिस्टम चाहिए। हम ये डिसीजन पॉलिटिकल नहीं कर सकते हैं, ये डिसीजन मेरिट पर करना पड़ता है। और इसलिए कहाँ इकोसिस्टम है जिस स्टेट में हम बल्क ड्रग पार्क बना सके, यानी कि हम API का मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो जहां इकोसिस्टम है उसको देखते हुए 1,000 करोड़ रुपीस भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट करके, स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करके 3 बल्क ड्रग पार्क, एक वाइजैक में, दूसरा गुजरात में, तीसरा हिमाचल प्रदेश में, 3 बल्क ड्रग पार्क का ऑलरेडी काम चालू हो गया। उसके साथ मेडिकल डिवाइस सेक्टर हमारे लिए इमर्जिंग सेक्टर है। हम 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का देश है और आज 70% मेडिकल डिवाइस हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमें कम करनी होगी। उसके लिए मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए तय किया। मेडिकल डिवाइस पार्क में एक इकोसिस्टम होती है, वहां एक कॉमन फैसिलिटी, टेस्टिंग फैसिलिटी, अदर टाइप ऑफ फैसिलिटी, कॉमन मेडिकल डिवाइस के लिए मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट करने के लिए 4 मेडिकल डिवाइस पार्क हमने करने के लिए तय किया। उसका काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। एक हम तमिलनाडु में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। 4 मेडिकल डिवाइस पार्क का काम ऑलरेडी चालू हो गया है। छोटी छोटी MSME है, आपने देखा होगा, तो MSME के क्लस्टर को मदद करने के लिए, फार्मा इंडस्ट्रीज क्लस्टर को हम कैसे मदद कर सकते हैं, उसके लिए भी स्कीम हमने चालू की। उसके अलावा इंडिविजुअल कोई MSME है, वो अपग्रेड करना चाहते हो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, WHO GMP कंप्लाइंट प्लांट करना चाहती है, उसके लिए भी हमने स्कीम चलाई। इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ के आपने लास्ट वीक में हमारा अनाउंसमेंट देखा होगा, शेड्यूल M को हमने एनफोर्स करना चालू कर दिया है। जो 2018 में न्यू शेड्यूल M में रिफॉर्म किया गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन 6 महीना में, हमारे पास 10,500 फार्मा इंडस्ट्रीज है, उसमें 8,000 इंडस्ट्रीज MSME है। हमने तय किया है कि MSME में भी 2 पार्ट बना दिया है। 200 से कम जिसका टर्नओवर है और 200 से अबव टर्नओवर वाले कंपनियों के लिए हमने तय किया है कि उसको 12 महीने में, 12 मंथ, 1 ईयर्स में
उसको शेड्यूल एम को एनफोर्स करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कंपलसरी है। और उसको 6 महीने में, और छोटी इंडस्ट्रीज है 2000 से कम, उसको 12 महीना दिया गया है, ताकि वो अच्छी तरह से अपने यहाँ शेड्यूल एम का इम्प्लीमेंटेशन करे, हम क्वालिटी में भी बने रहे, हम हमारा फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल भी बनाए रखे। दोस्तों, दूसरा, ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस, एक जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड का एक न्यू ऑर्डर बना था और सारी दुनिया की एक सोच बदली थी। शांति की बात होने लगी, उसमें से यूनाइटेड नेशन आया, सामूहिकता की बात होने लगी, कंसल्टेशन की बात होने लगी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया। मैं देख रहा हूं दुनिया समझ रही है पोस्ट कोविड के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया इज ए इम्पोर्टेंट कंट्री। क्योंकि ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस के दरमियान जब दुनिया वैक्सीन का स्टॉक पाइलिंग कर रही थी, तब वैक्सीन मैत्री के तहत इंडिया दुनिया को मदद कर रहे थे। 98 कंट्री को हिंदुस्तान ने सस्ती वैक्सीन उपलब्ध कराई। जब दुनिया लॉकडाउन में थी, दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, उस वक्त में सारी दुनिया से बात करता था। उस वक्त इंडिया ने ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन सारी इंडस्ट्रीज को ओपन रखवा के मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरी करी, दुनिया को भी मदद की। 150 कंट्री में इंडिया ने उस वक्त केवल डेली, क्योंकि प्रोसेस मेरी मिनिस्ट्री करती थी, लॉकडाउन में नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, डेली 5 से 6 फ्लाइट लैंड होती थी केवल मेडिसिन लेने के लिए। लेकिन उसमें 2 पहलू है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स उसमें 2 है। दुनिया मेडिसिन लेने के लिए आई, उस वक्त हमारा जो संस्कार है ना, भारतीय परंपरा है, हमारे यहाँ हेल्थ एक अभी कॉमर्स नहीं है, हमारे यहाँ हेल्थ है, सेवा है। ये सेवा भाव को दिखाते हुए हमारी कंपनियों ने दुनिया में एक्सपोर्ट किया, प्राइस नहीं हाइक की। उस वक्त हम चाहते तो जो भी प्राइस मांगे दुनिया देने के लिए मजबूर थी, उसको देना पड़ता था। लेकिन हमने प्राइस, इंडियन कंपनियों ने प्राइस नहीं बढ़ाई। मोदी जी ने सभी कंपनियों को कहा कि दुनिया को मदद करनी है। हमने मीटिंग की, सभी कंपनियों ने अफोर्डेबल प्राइस में, जो पहले प्राइस में बेचते थे वही प्राइस में दुनिया को मेडिसिन उपलब्ध कराई। दूसरा, क्वालिटी के साथ बार्गेनिंग नहीं किया। हमारे एक कोई भी कंपनी की एक्सपोर्ट की हुई मेडिसिन के सामने शिकायत नहीं आई। उससे दुनिया का नजरिया हिंदुस्तान के प्रति देखने का बदला। इंडिया इज ए ट्रस्टेड पार्टनर। इंडिया खरा हुआ पार्टनर है जो क्राइसिस की स्थिति में हमारे साथ में रहते हैं, और इसलिए कोविड के बाद दुनिया इंडिया से रिश्ता रखना चाहती है, इंडिया से इंपोर्ट करना चाहती है, और इंडिया से इंपोर्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करनी चाहती है। इसलिए यहाँ जब बता रहे थे 50 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, 500 से अधिक डेलीगेट्स आ रहे हैं, उसका एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। वहां दुनिया भी आपस में बात करेगी, इंडियन कंपनियों से भी उसकी मीटिंग होगी। इंडिया में आके, इंडिया में हेल्थ सेक्टर में क्या चल रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ से पूरी होगी। इंडिया इनोवेशन और रिसर्च में क्या कर रहा है। दोस्तों, हमने बहुत कंटेनर भर भर के दुनिया को मेडिसिन भेजी है। समय बदला है, बदलते समय में हमने रिसर्च और इनोवेशन के लिए जोर दिया है। आज तक क्या होता था, व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच। आज तक हम डिसीजन करते थे, एक साइड में देखते, जो निर्णय किया उस दिशा में आगे बढ़ जाते। जी नहीं, हम रिसर्च और इनोवेशन की बात करें तो उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करनी होगी। गवर्नमेंट सेक्टर ही सारा रिसर्च करेगा क्या? प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की लैब ओपन नहीं होनी चाहिए। दुनिया की वर्ल्ड क्लास वन हेल्थ इंस्टीट्यूट लैब हैदराबाद में आईसीएमआर ने बनाई। हमने नॉट ओनली फॉर वन लैब बट आईसीएमआर के 19 लैब को, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट रिसर्चर हो, इनोवेटर्स हो, वो चाहे तो वहां जाके रिसर्च कर सकते हैं। भारत सरकार ने इस सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट
हमारे देश की इंस्टीट्यूट सभी प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन कर दिया, ताकि उसको रिसर्च और इनोवेशन में हम सपोर्ट करें। और 1, 2, 3 पहलू आने वाले दिनों में हमने सीक्वेंस में तय किया, क्या 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 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने बहुत कंटेनर में मेडिसिन भेजी, अभी हमें लिफाफे में मेडिसिन भेजनी है। कंटेनर में भेजते रहे, कंटेनर की कीमत होती है इतनी, 5 टैबलेट की कीमत हमें देनी पड़ती है, क्योंकि रिसर्च हमारे यहाँ कम होता था। हमें रिसर्च और इनोवेटर, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कहाँ कमी है। आज दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। क्या वो रिसर्च यहाँ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसको एक इकोसिस्टम देनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए। उसको सहयोग करने के लिए सीक्वेंस में भी हम आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम लेके आएंगे, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी स्टेक होल्डर्स, स्टार्टअप, हमारा स्टार्टअप हो, एमएसएमई हो, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हो, R&D फैसिलिटीज हो, इंक्यूबेटर्स हो, सार्वजनिक और निजी अस्पताल हो, सब लोग, उद्योग, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थाएं, निवेशक, सब लोग को एक प्लेटफॉर्म पर आने का अवसर ये G20 हेल्थ समिट के परिसर में मेडटेक एक्सपो के द्वारा भी मिलेगा। मेरा विश्वास है कि ये मेडटेक एक्सपो से देश को भी फायदा होगा और दुनिया को पता चलेगा कि इंडिया एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ फार्मा सेक्टर में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मेडिकल डिवाइस सेक्टर में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। धन्यवाद दोस्तों। Thank you very much, Minister Mandaviya ji. Your inspiring words will be the pillars for organizing the significant India MedTech Expo. Now we will be having the question-answer session. I request Dr. Manisha Verma, ADG PIB, to kindly moderate the question-answer session. Thank you. Can we have the question, please? Nitinder ji from Doordarshan. नितेंद्र दूरदर्शन से हो सर। पहले तो ये बताइए कि इंडिया मेडटेक जो एक्सपो होगा उसका आउटकम क्या होगा, और दूसरी बात यह है सर कि फार्मा सेक्टर में कई रिफॉर्म्स किए गए हैं, लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है कि कई ड्रग्स पे सवाल, खासतौर पे जो सिरप की बात हुई थी उस पर सवाल उठे। अभी इराक में भी एक सिरप पे सवाल उठा है। तो आपने कल एक समीक्षा बैठक भी इसमें की है और आपने सेल्फ रेगुलेशन की बात की है मैन्युफैक्चरर से। तो ये क्या है और कैसे इस तरह जो स्पूरियस ड्रग्स है उस पर काबू पाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? मेडटेक एक्सपो का आउटपुट तो मैंने बता दिया, लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया में कई जगह से हमारी मेडिसिन पर उंगली उठाई जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी बहुत क्लैरिटी है। मैंने एक CDSCO में स्क्वाड गठित की है। वो स्क्वाड आज असेसमेंट करना चालू कर दिया है। हर दिन कोई न कोई स्टेट में 4-5 कंपनी की मुलाकात करती है, जाती है। उसमें से स्पूरियस मेडिसिन पाई जाती है, या तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ना होती हो, उसके सामने एक्शन भी करने के लिए हमने शुरुआत कर दी है। कल मैंने कहा है और कल मैंने सभी फार्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को कहा है कि आप सेल्फ असेसमेंट करो, सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम खड़ी करो। ये कोई एक कंपनी का विषय नहीं है, देश का विषय है। देश में बिकेगा तो देश के लोगों के साथ भी खिलवाड़ है, और दुनिया में बिकेंगे तो इंडिया की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ है। इसलिए स्पूरियस मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। हर दिन आपने कोई न कोई जगह पे देखा होगा हमारा एक्शन हो रहा है, लेकिन 10,500 जितनी इंडस्ट्रीज है हमारा फेडरल सिस्टम में, कई पावर स्टेट को है, कई पावर सेंट्रल को है। ये सब स्थिति को दुरुस्त करने के लिए हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी नया ला रहे हैं, ताकि उसको होलिस्टिकली, आज कोई मेडिसिन की फैक्ट्री लगानी है तो जेनरिक है, इनोवेटिव और रिसर्च न्यू ड्रग्स नहीं है तो स्टेट ही उसका परमिशन दे देती है। तो सेंटर को पता ही नहीं है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ बन रही है।
तो जरूरी है कि सबको साथ में एक ही रजिस्ट्री पर एक ही रजिस्ट्री पर सारी इंडस्ट्रीज हो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज हो, उसका ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हो, तो ये सारा काम एकदम गति से चल रहा है। दूसरा, कोई भी क्यूरियस मेडिसिन बनाने वाले, अभी हमने तो एक्सपोर्ट के लिए कफ सिरप है उसके लिए भी कंपलसरी टेस्टिंग कर दिया है। इंडिया में ही उसको टेस्ट करके सर्टिफिकेट लेके ही एक्सपोर्ट करना है, तो ये स्थिति का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा, फार्मा सेक्टर में नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से भी आक्षेप प्रत्याक्षेप होता रहता है, उसको भी हमें देखना है। Next question, please. Please introduce yourself also. सर तरुण फ्रॉम जी बिजनेस। सर कितना इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं सर इस मेडटेक एक्सपो से सर, और कितनी कंट्रीज इसमें भाग लेंगी? उसमें दो अपॉर्चुनिटी होती है। इन्वेस्टमेंट इज वन थिंग। नाउ एंड टुडे इंडियन फार्मा कंपनीज कैपेबल नॉट ओनली फॉर इंडिया इन्वेस्टमेंट बट अब्रॉड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। वो लोग यहाँ आके ये भी अपॉर्चुनिटी को देखेंगे कि भाई हम वैक्सीन सेक्टर में दुनिया की रिक्वायरमेंट का 70% वैक्सीन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है। दुनिया चाहता है कि हमारी कंट्री में आके भी इंडिया वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग करे, इंडियन कंपनियां, ये हमारी एक्सपर्टाइज है। इस दिशा में भी बात होगी। दुनिया को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना है, जॉइंट वेंचर करना है। किसी के पास टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास इकोसिस्टम है, एफोर्डेबल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी है। हर साल में ऐसा 3-4 एक्सपो छोटा मोटा होता रहता है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट, इंडिया में इन्वेस्टमेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा और इंडियन कंपनियों को दुनिया में अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और कोई Any question or shall we just close it? I have one Last question, Pratibha Raju from Economic ET has one. So this was, sir, regarding the long pending demand from the industry side, medical devices side. They want us create a new drug and separate infrastructure for medical devices itself. Even the parliamentary panel has recommended. So what do you have to say about it? They want to set up a separate legislation department and regulatory infrastructure for medical devices. Anything on that, please? ये आपका सही क्वेश्चन है। मेडिकल डिवाइस इंडिया में एक इमर्जिंग सेक्टर है और हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना था 1948 में। उस वक्त इंडिया में ये सेक्टर बहुत ही नहीं माना जाता, नहीं था जैसा था, इसलिए उसमें एक सेपरेट सेक्टर नहीं था। लेकिन अभी जो न्यू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ रहा है उसमें मेडिकल डिवाइस का एक अलग सेक्टर है। उसमें हम ये प्रावधान करने जा रहे हैं कि जिसमें CDSCO के नीचे एक फार्मा और एक मेडिकल डिवाइस, दो जॉइंट CDSCO हो, ताकि वो सेपरेट उसका काम करे। मेडिकल डिवाइस की एक्सपर्टाइज एक अलग है, सेक्टर अलग है, फार्मा एक सेक्टर अलग है, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच में हेल्थ है। तो CDSCO एक रहे और उसके नीचे दो विभाग रहे। इस दिशा में हम लोगों ने काम करना चालू किया। एक क्वेश्चन Please introduce yourself. यस सर, आलोक प्रियदर्शी CNBC आवाज से सर। आलोक प्रियदर्शी CNBC आवाज से बोल रहा हूँ सर। फार्मा, खासतौर से मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में बन सकती हैं
उसका भी अभी भी जीरो ड्यूटी या बहुत कम ड्यूटी पे इम्पोर्ट होता है, वो इंडिया में बन सकती है, बावजूद इसके इम्पोर्ट होता है। इसकी वजह से जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है। सर, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर कोई विचार चल रहा है कि जो इम्पोर्ट जो देश में बन सकती है वैसे मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो ड्यूटी है, ड्यूटी में बढ़ोतरी की जाए ताकि वो इंडिया में आ ना सके, या डोमेस्टिक उसमें दो बात है, बात आपकी सही है, दुनिया में आ ना सके ऐसा तब हम कर पाए जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड हो जाए, तो तब तक हमें आने भी देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड होने का क्रम अभी चल रहा है। ऐसी स्थिति में उसको इंसेंटिव देना, उसको सपोर्ट करना और लेवल फिल करना ये आवश्यक होता है। तो अभी इंपोर्ट भी हो और उस तक हम उसको सपोर्ट भी करते रहे ताकि इस लेवल पर पहुंच जाए, धीरे धीरे बाद में हमारा बढ़ता जाएगा और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाती रहेगी। उसके लिए एक मैकेनिज्म है, हम रेगुलरली कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ बैठते हैं, हमारी कौन सी देश की मेडिकल डिवाइस है या तो मेडिसिन है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनफ है, तो बाद में हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जब तक कम हो तब तक हम उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें और इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा करें तो महंगा भी हो जाएगा और देश की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी। तो दोनों चीज़ों को देख के फार्मा सेक्टर में हम अदर सेक्टर के साथ हेल्थ सेक्टर को सारी पॉलिसी उसके लेवल की नहीं कर सकते, क्योंकि एक हमारी हेल्थ रिक्वायरमेंट एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए बैलेंस करना होगा। Jitendra ji, you had a question? सर, यस, G20 की बैठक अब फाइनल बैठक है हेल्थ वर्किंग ग्रुप की, उसमें क्या आप उम्मीद रखते हैं कि किस तरीके से आउटकम रहेगा और भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? हमने कोशिश की है, मेडिकल काउंटर मेजर एक हेल्थ का हमारा एजेंडा है, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल हेल्थ का हमारा एजेंडा है, डिजिटल हेल्थ ये हेल्थ का हमारा एजेंडा है। तो ये सब सेक्टर में और पेंडेमिक में साथ में काम करना, दुनिया को साथ में मिलके काम करना, ये हमारा एजेंडा है। और उसके लिए अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें बहुत सकारात्मक प्रतिसाद मिला है। मैं मानता हूँ कि ये चारों एजेंडा पर सहमति बनेगी तो वो बाद में G20 का एक पार्ट बन जाएगा। So we will wrap up the question and answer session. One question. एक Yes. Yes, ma'am. Sir, I am representing Transnesia Biomedical Limited. My name is LB Gautam. So you are talking right now about the quality medical device the things. So we are the one of the largest manufacturing of the medical devices in India. But we are manufacturing in India, that's true. And quality is also assured that. But maximum state is not ready to accept make India equipment. Major part is... ये ऐसा ही होता है, मैं समझ गया विषय। जी ये लोगों की आदत हो जाती है। फॉर एग्जांपल जी उसके लिए मिशन मोड में काम करने का दुनिया में से आता है वही अच्छा है। और हमारे मेडिसिन में तो दूसरा भी एक है कि जो महंगी मेडिसिन वो अच्छी मेडिसिन, वो कहेंगे कि 1 लाख रुपया का इंजेक्शन है। और स्टेंट में ऐसा होता था, जब स्टेंट की बात जब प्राइस हमने कैप किया तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये ड्रग सैल्यूटिंग स्टेंट है, इंडिया में बना हुआ है, उसकी कीमत है 35,000। ये जर्मन में बना ₹1,00,000 है, यूएसए का 1.5 लाख रुपया, एग्जाम्पल के तौर में बोल रहा हूँ। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसका पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में हो और डॉक्टर साहब ये 3 बताए तो यही कहेंगे साहब अच्छा में से अच्छा हो वो लगा दो, यही बोलेंगे हम, आप सब वही बोलेंगे। तो वैसा ही जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या होता था। मैं 2016 में फार्मा मिनिस्टर MOS बना, हमारा खुबा साहब है वैसा। तो उस वक्त मैं काम ढूंढ रहा था कि मुझे उसमें क्या काम करना है। तो मैंने सीनियर मिनिस्टर मेरा आनंद कुमार जी था, उसको रिक्वेस्ट किया कि साहब मैं क्या काम करूँ, आप मुझे कुछ सेपरेट काम दो। तो उन्होंने मुझे काम दिया कि जनऔषधि, जो आज सारे देश में जनऔषधि एक ब्रांड बन चुकी है ना सस्ते मेडिसिन के लिए, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर काम करो। प्रधानमंत्री जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि सबसे बड़ा पुण्य का काम है।
जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच में केवल एक उसके ऊपर ब्रांड नेम लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर पैरासीटामोल लिखा होता है, उसमें कंपनी का नाम कालपोल हो, सेल्फोल हो, जो भी हो लिखा होता है। दोनों में 500 mg पैरासीटामोल है और तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसकी कीमत 25 रुपया हो जाती है, उसकी कीमत 3 रुपया होती है। तो ब्रांड एक अपनी वैल्यू बना देता है, प्राइस बना देता है। जेनरिक मेडिसिन हम लोग जेनरिक पर विश्वास ही नहीं करते थे। जो आपने कहा ना, वैसा है कि फॉरेन कंपनी, ये भी देखने जैसा है, वो यहाँ ब्रांडेड मेडिसिन बेचती है और अपनी कंट्री में इंडिया से जेनरिक मेडिसिन इंपोर्ट करके बांटती है। तो उसके लिए एक व्यापक तौर पर अवेयरनेस का आउटपुट ये निकला, डेली कुल मिला के 9,600 से ज्यादा जन औषधि केंद्र है। 12 से 15 लाख लोग डेली मेडिसिन लेने के लिए जन औषधि केंद्र पर जाते हैं। धीरे धीरे पहले जेनरिक मेडिसिन का शेयर 2% था मार्केट में, आज बढ़ के 14% हो गया। अभी उसको 50-60% तक ले जाना है। कंपटीशन में लोगों का भरोसा बढ़ा, विश्वास बढ़ा। ऐसा इंडियन मेडिकल डिवाइस का भी देश में पॉपुलैरिटी बढ़े, और हम उसके लिए डॉक्टर को भी अवेयर कर रहे हैं। पब्लिक टॉकिंग पॉइंट बनना चाहिए। आप भी सब जर्नलिस्ट लोग हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यही बात रखते जाइए भाई, जहां भी अवसर मिले वहाँ। एक मानक से पास ही होता है भाई, स्टैंड कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, स्टैंड होता है। उसका वर्जन बदलता है कि उसका अपग्रेड वर्जन है, उसका अपग्रेड वर्जन है, उसका अपग्रेड, बट मिनिमम जो उसकी क्वालिटी है उसके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकता। इसलिए बुरा कुछ नहीं है, अच्छा हो सकता है, लेकिन बुरा कुछ मेडिकल डिवाइस नहीं होता है जो इंडिया में बनता है या बाहर से आता है। क्वालिटी मिनिमम पैरामीटर तो उसको पूरा ही करना होता है। ये पब्लिक परसेप्शन जब हम बना पाएंगे तब हेल्थ केयर और अफोर्डेबल होगी। सर, इसमें एक और इनपुट्स है। अभी 90% स्टेट्स ने अभी मेक इन इंडिया रूल्स एक्सेप्ट नहीं किया। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल हैड डन द गुड जॉब। उन्होंने एक लिस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स की जारी कर दिया कि ये इंडिया में ही बनेंगे, बाहर से नहीं करेंगे। लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द स्टेट लाइक यू आर फ्रॉम गुजरात, यूपी, दे आर जस्ट डिनाइंग दैट आई डोंट नीड द मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। अभी इंडिया का सबसे बड़ा प्रिक्योरमेंट आपका फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री जो इंडिया में बना रहे, क्वालिटी में है, एम्स में सब जगह, लेकिन फिर भी उनको अभी 7 करोड़ का ऑर्डर अभी फॉरेन ब्रांड को किया है, जो कि हमारा राइट प्रोटेक्टेड है, रिजर्व फॉर मेक इंडिया। दूसरा, एम्स गुवाहाटी, उसमें परचेज ऑर्डर ने भी हाइट से हमें दे दिया है। इट्स मैम it's a train that So let's give a chance to one more. yes उसमें because it's nothing hidden that ma'am, it's just a आप एक मिनट, उसके लिए हमारी पॉलिसी है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की, we have already presented that sir, और ऐसी कोई डेविएशन हुआ होगा जी हम it's 3 major बार deviation पूछते हैं। yes sir, समझ लो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है तो तुरंत एक लिस्ट होता है, yes लिस्ट में से पूछ लेते हैं, और इंडिया की कैपेसिटी है बनाने की, एक प्लांट है, 2 प्लांट है, तो भी हम इंपोर्ट को परमिशन नहीं देते हैं। जी sir, ऐसा कोई डेविएशन हुआ होगा तो अवश्य हमारे ध्यान में लाना है, yes sir, हम उसमें सपोर्ट करेंगे। yes sir, हम हमारी क्षति हो तो सुधारने के लिए भी तैयार है, yes sir, हम ट्रांसपेरेंट है भाई। हमारे लिए हमने बोल दिया वही सही है ऐसा नहीं होता है, कभी आप भी सही बोले तो हम उसको और इन्फॉर्मेशन देंगे, हम अवश्य उसको दुरुस्त करेंगे। धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न सर, एक आखिरी प्रश्न ले लेंगे उनसे सर। हमने नहीं किया है वो, ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने केवल, अभी हम यहाँ असेसमेंट करेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री, अल्टीमेटली तो हेल्थ मिनिस्ट्री का पावर है ना, एक बार उसको देखना पड़ेगा। ये मेरे पास लिस्ट आया है, वो कोई डिसीजन नहीं होगा, पूछो। उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें मेरा बहुत लंबा अनुभव हो गया है कोविड में। तो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग बंद नहीं किया, और जीनोम सीक्वेंसिंग की सारी चैनल नॉट ओनली फॉर कोविड बट कोविड से हम सीखे। तो सभी जगह में कोई ना कोई डिसीज चलता हो, उसका सैंपल
हम हर ब्लॉक से परमानेंट लेते रहते हैं, नॉट ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट बट ब्लॉक लेवल पर, ताकि कोई न्यू वेरिएंट पाया जाए, कोविड के अलावा भी कोई वायरस का न्यू वेरिएंट पाया जाए तो तुरंत ही ICMR को पता चले और उसके पर एक्शन करें। आज तक इंडिया में 243 न्यू अलग अलग वेरिएंट, सब वेरिएंट टू सब वेरिएंट पाया गया है। बेसिकली मैं वेटनरियन हूँ तो मुझे भी पता रहता है, तो कोई घातक वेरिएंट अभी नहीं है। और 1 साल 2 साल हो जाने के बाद जैसा इन्फ्लुएंजा डोमिनेटेड वायरस हो गया, अभी उसका हर साल में 2 बार वो म्यूटेट होता रहता है और हमें 2 बार खांसी बासी होती है ना। वैसा कोविड आता रहेगा, जाता रहेगा, हमें कोई हिट करे, ऐसी स्थिति 100-200 सब वेरिएंट हो जाते हैं, बाद में ऐसा कोई वेरिएंट नहीं बनता कि जो घातकी हो जाता है, तो कोई चिंता करने का कारण नहीं। यही इम्पोर्टेंट था ना। नहीं, तो ही बोला। चलो धन्यवाद, अच्छा लगा। Thanks to Dr. Verma and to all the media representatives for their queries. Now I invite Shri Ravindra Pratap Singh, Joint Secretary, Policy. No, the vote of thanks. Honorable Minister Dr. Mansukh Mandaviya, Honorable Minister of State, all the dignitaries on and off the dais, I would like to thank you all for being present here with us. Thank you. Warehousing Development and Regulatory Authority, Mr. Amit Kumar Singh, Managing Director and Director for Marketing and Corporate Planning, Central Warehousing Corporation, Mr. Sachin Bhanushali, who is the advisor of our FICCI Committee on Logistics, business leaders, members from the diplomatic community, and friends from media. A robust and cost-effective logistic and warehousing sector has become crucial in the global business and economic environment. The sector plays an important role in supporting the country's comprehensive logistic infrastructure and achieving its vision to become the world's third largest economy by 2027. We are very confident that the initiatives taken by the government and the active participation of the industry will pave the way forward for the development of the sector. We have amongst us distinguished panel to deliberate upon the key opportunities and latest development in the sector. To begin with, I invite Mr. Sachin Bhanushali to deliver the welcome address and set the context for today's summit. Mr. Bhanushali, please. Hello, good morning, dignitaries on the dais and delegates participating in this important event, which plans to focus on warehousing and supply chain. At the outset, it's my privilege to welcome Ms. Sumita Daura, Special Secretary Logistics, DPIIT, to the Warehousing and Supply Chain Summit, wherein we want to primarily focus on building reliable, resilience, and sustainable supply chain. Thank you so much, Sumita. I also have the privilege of being on the dais with Mr. T.K. Manoj Singh and Mr. Amit Kumar Singh. I think warehousing is a subject which has been discussed by many but understood by few. And those who understand it are participating in the event today. I'm sure we will be immensely benefited by the deliberation as well as the question answer session, which will be a part of the event today. When we look at Indian manufacturing sector in particular, both on the consumer side as well as on industrial side, one of the areas where the shoe pinches is logistics. And within logistics, I think there are two aspects of logistics which
kind of cause concern in the minds of not only the logistics managers in the companies, in the manufacturing entities, but also amongst the C-suite executives. Transportation and warehousing. It's elementary if you look at it that way, and that's why probably a lot of people discuss a lot about logistics. But when it comes to brass tacks, there are many areas which require tightening up from regulatory point of view as well as from practice point of view, whether it is integration or whether it is use of technology in order to deliver the right kind of service mix, product mix to the industry. Couple of thoughts that I would like to put forth before I request the dignitaries on the dais to come and speak and share their thoughts with all of you are, one is that there has always been a concern about logistics cost in India, and there has been a great deal of disagreement about what has been the what is the logistics cost. So currently we follow the methodology of logistics as a percentage of GDP to be the actual logistics cost. So that basically brings us on a same page as far as understanding of the concept is concerned. If we deep dive into the concept of logistics cost, we look at transportation cost as well as cost of carrying inventory, which has two aspects: cost of inventory itself, which is on roads or on rail, and the cost of carrying that inventory, because you need to create a huge amount of infrastructure in order to ensure that the inventories are carried. Now, the inventory levels in general in India are considered to be on the higher end, primarily because our transport delivery system is not considered as reliable as it should be. So if we compare road transportation versus rail transportation, both operate at a fairly reasonable 20-24 kilometers per hour kind of average speed. Speed is not something that should impress you. What should impress one is essentially the transit time. But when it comes to transit time, our transit times from a distance point of view, despite being a fairly large geography, despite being almost a subcontinental geography, are not as reliable. In fact, when you go to logistics manager, one of the things that they ask for is that what is the assurance that 95% of the cargo will reach in time so that patency of our production system, our assembly line, is maintained? I think that's where there is going to be a great deal of efficiency which can be brought in by adding additional capacity to rail transportation. Now, if we look at it from cost point of view as well as from an environmental impact point of view, I think rail transportation in Indian context has to play a very great role. It's not just because I'm an ex-railway person, but I genuinely believe that if railways are able to deliver their freight transportation service at a significantly better transit times as compared to road transportation, not only the logistics cost will come down, but it will also result to a very great extent. And when I say logistics cost, I mean all the three components. It will affect to a very great extent as far as the level of the inventories which are maintained, as well as the cost of carrying that inventory. On the backdrop of GST, another point that I feel is important is that now we are more than 5 years old in GST. One of the points that I always feel strongly about is that change in distribution methodology in India, with GST having practically eliminated what can be called interstate barriers, hasn't taken place at a pace at which it should have taken place. So we continue to be dependent heavily on road transportation as far as manufacturing industry is concerned, and that does result into fragmentation of cargo, and fragmentation of cargo results into particularly the warehousing solutions, whether it is for supply chain solutions, whether it is for distribution solutions, or whether it is for fulfillment solutions, being operated out of small outfits rather than larger warehousing parks in the multimodal logistics park that we are going to talk about, do not bring in the advantage. So I think there is a time for us to look at a revolutionary change in the way we do our distribution business. So that's the second thought that I would like to put forth. The idea of this event today essentially is not only listen to the experts, but also listen to the people who actually feel the pinch of the shoe and understand where
regulatory changes as well as changes in the methodology of the industry are required to be undertaken. So I think with that, I would request the event to move forward as far as today's discussion is concerned. I once again thank people on the dais for having graciously agreed to take time out of their busy schedule and join us for this event. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Bhanushali. I would now invite Mr. Amit Kumar Singh to deliver his address, please. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, distinguished members of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry and all present here. It's a great pleasure and gratitude I stand here before you. It is a privilege to put forth my views on this crucial topic of reliable, resilient and sustainable supply chains. And the way I like what Sachin just mentioned, a lot of people talk about warehousing, but few understand. He has made my task a little difficult. Because though coming from a warehousing background of 2 years only, I have majorly been in a transportation sector, and I would supposed to be talking about warehousing. So bear with me on that. We are all aware that it's increasingly interconnected supply chains play a vital and pivotal role in economic growth and facilitating trade and meeting the needs of consumers. While navigating the complexities of today's global landscape, it is imperative that we focus on supply chains which are not only efficient, but cost-effective, resilient, and sustainable. When we talk of reliability, what comes to mind is that we should be able to give a consistent performance, the degree of consistent performance, and perform without failure. So the key parameters, one would say, would be consistency, timelines, quality, transparency, flexibility, and effective communication. So the reliability becomes the foundation stone for any supply chain system. And to achieve that, we have to look at the bottlenecks, enhancing coordination, and about optimizing the systems. The two key components, transportation and warehousing, which are part of the logistics supply chain, I won't talk much about the transportation part. Sachin has already touched on that aspect, that if the railway systems are becoming more robust in the future and the capacities are created, then as the economy as a whole, we are going to be more focused on producing a reliable and resilient supply chain system. And it is also going to be impacting very positively on the logistics cost. When you look at the warehousing sector, what we see
in the span of these 2 years which I have spent in the warehousing sector, what I observe is that it's a very scattered section.